Motion for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Shri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Muralidharan, I move the following motion, that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha, Y. Shri Vishwambar Prasad Nishad, retired from the Rajya Sabha on 4th July 2022, to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the remaining period of the term of the committee, and do proceed to elect in the manner as directed by the chairman one member from among the members of this House to serve on the said committee. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, on 12th of December 2022, I had made a request to the leaders of the parties to allocate seats amongst their members for the sake of my convenience and for compliance of rules, in identifying from which seat the member whose name has been called is speaking and is entitled. I am constrained to observe that my request has not drawn the desired attention till date, and parties such as INC, AAP, TRS, Shiv Sena, JDU, and SP are yet to allocate seats amongst their members. I once again request you to kindly expedite and forward your details without any further delay to the table during course of the day. Honorable members, I have developed a practice that if there is any input to me, I will address it. So the honorable members may show patience and wait for it. Honorable members, under Rule 267, I have received 2 notices for suspension of the rules. Ms. Dola Sen, concern over price rise of essential commodities. The problem with the notice is that the trap in which the professor fell is getting contagious. The same is not in order. Shri Pramod Tiwari, concern over illegal and unprovoked Chinese transgressions in Depsang Plains and in other parts of Arunachal Pradesh. I am constrained to observe that in spite of a very comprehensive ruling, in spite of thorough focus on the rule, its requirements, the compliance could not have been more desirable. It is lacking, Tiwari ji, on every element of Rule 267. I have carefully gone through your notice, given the high stature you have and long parliamentary career. I will appeal to you as a very senior member of the House to kindly bestow attention and help me develop wholesome practices so that we are in compliance of the rules. I can assure the members, because they have taken a stand yesterday, that my predecessors have invoked 267 during their respective tenures. The number has never been double digit during their 5-year tenure. But I am not a statistics-driven person. If there will be an occasion, I will invoke the rule. If there will be no occasion, I will not invoke it. Because I am repository of your wisdom,
your conscience and your rights. No, please, no. Do your homework, no, adolescent, no. No, I wouldn't do it, please. Matters of urgent public importance, Josh K. Money, please go ahead. Please, no, please. Sir, Josh K. Money. yeah, sir, this is an SOS message from the rubber farmers of Kerala, sir. This issue I have taken up not only this August House many times, I have taken up in the Lok Sabha when I was a member there also, sir. Sir, yesterday again in the appropriate bill, I have flagged off this issue. Today, again I'm taking up this issue in the Zero Hour. It shows the gravity of this issue, sir. So here, you know rubber, natural rubber, is a strategic produce right from the beginning of independence, sir. It is being used in the military down to the school, the children use it, sir. You know, in 1947, to promote rubber, the Rubber Act was enacted, sir. And all the promotion was being done by the government of India. Now, I would like to flag a few points here, sir. The main reason of the fall in price of natural rubber is because of the indiscriminate import of rubber. And for the last decade a decade back, it was 250 rupees per kilo of natural rubber. It has come down today less than 140 rupees a kg, sir. So now it is indicative that the import of natural rubber has a correlation with the price of natural rubber, sir. So the irony is that whenever the price of natural rubber goes down, the price of the tire increases. The tire industry increases the price of the tires, sir. And not only that, if you look at the annual report of the tire manufacturer, leading tire manufacturer, they're huge, enormous profit they make these periods, sir. So I believe that the import duty collected by the government of India is a sweat of the rubber farmers and should be passed on to the rubber farmers. So another point I would like to mention that, sir, you know, the global concern is for the climatic change, sir. To mitigate the climatic change, the best solution is planting trees, sir. And the research shows that the maximum carbon absorption by the rubber plantation, the rubber trees are much high. If you take up the SOC, which is the jargon used, which is the terminology used, soil organic carbon, it is 119 per hectare, mg per hectare, sir. It's very high, sir. So the amount set apart for the climatic change mitigation may be given to the farmers, the rubber plantations, sir. Now I conclude, sir. One is to increase the import duty. And whenever the domestic price is less than the global price of natural rubber, we see the tire manufacturers importing the natural rubber with a 25%. Honorable members, point. Honorable members, I avail the opportunity to make a very special request to all of you. I urge all of you to minimum plant 100 trees in a year. And when the honorable members will do it, geographically well spread out, it will not be much in our numbers, but surely it will send a very good message which will be motivational and inspirational. I would be happy to be informed by the members their performance on this count, so that over next 1 year, each of the member engages in plantation of at least 100 trees in his and her own right. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir. Thank you for allowing me to raise a very important issue which relates to the mental health of children in our country. Also to underline, sir, this is my first zero-hour submission being accepted since 7th of December, this session. Sir, एक ऐसे देश में
जहां अभी फिजिकल हेल्थ को लेकर के ही हमारे सामने सैकड़ों अवरोधक हैं, तो मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर और भी बाधाएं हैं। सर, अगर हम सब अपनी शब्दावली का विश्लेषण करें, हम सब अपने विमर्श का विश्लेषण करें, तो मानसिक रोग को लेकर के हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह हैं वो हमारी भाषा और हमारे भाव में प्रकट होते हैं। माननीय सभापति महोदय, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का मामला चिंता का विषय कोविड से पहले भी था, लेकिन कोविड के बाद की परिस्थितियों ने इसे और भी दुष्कर और मैं समझता हूं इसका प्रसार बढ़ा दिया है। कोविड से पूर्व भी तकरीबन 5 करोड़ बच्चे, और सर ये जो बच्चे हैं ये आमतौर पर बड़े शहर में अगर आप देखें तो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन छोटे शहरों गांव में जाएं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये हमारी प्राथमिकता के बारे में एक ऐसी टिप्पणी है जो टिप्पणी कतई उचित नहीं लगती है। माननीय सभापति महोदय, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 13% ड्रग अब्यूज वाले जो बच्चे हैं 20 वर्ष से कम के हैं। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। कारक बहुत हैं, गरीबी है, उत्पीड़न है, घर का माहौल है या पीयर प्रेशर है, लेकिन तमाम चीजों में एक परिवार में जब इस तरह का कोई केस आता है तो वो कई तरह की चीजें देखता है। जैसे बच्चे खुदकुशी के ख्याल में रहते हैं, कितने लोग कैप्चर कर पाते हैं। बच्चे या तो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तरह का अग्रेसिव बिहेवियर, मैं समझता हूं कि वो भी प्रकटीकरण उसका होता है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन में रहने का और दोस्तों और परिवार से अलग होने की एक मंशा होती है। मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अब तक सरकारें कोई भी रही हो सर, सरकारों ने इसको उस गंभीरता से नहीं लिया है जिस गंभीरता की इस मुद्दे को, इस कंसर्न को अपेक्षा थी। मैं दूसरा एक आग्रह करूंगा कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य में पहलकदमियों पर विमर्श करें, विचार करें, तो बड़े शहरों के अलावा हमेशा हिंदुस्तान की हकीकत को देखते हुए छोटे शहर और गांव तक पहुंचने की चेष्टा करें। सभापति महोदय, 15 सेकंड और है, 12 सेकंड में मैं तीसरा आग्रह यह करूं कि सरकारी अस्पतालों में कस्बे से लेकर के जिले तक एक अलग व्यवस्था हो मानसिक रोग को डील करने की, तब शायद हम एक समेकित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। श्री जवाहर सरकार। Sir, thank you for giving me this opportunity to highlight a very important issue, and this is about the proposed amendment to the All India Service Cadre Rules. The amendment to Rule 6 of the IAS Cadre Rules 1954 relating to the deputation of IAS officers to the Union Government will give absolute one-sided overriding power to the centre in violation of the All India Service Act and spirit. At the same time, one appreciates the fact that there is an acute shortage of IAS officers, among other service officers also, at the centre for various reasons, including the demands of the states. The submission that I make, sir, just a little data. In West Bengal, only 11 out of 280 officers have been deputed to work at the centre, 11 out of 280. In Rajasthan, 13 out of 247. In Telangana, 7 out of 208. So there is no political color to it. It's an administrative requirement of the states. But at the same time, sir, I have worked exactly half, 16 years in the center and exactly half, 16 years in the state. So I know the situation. But, sir, I would submit from that experience and today in my opportunity before you that an overview needs to be taken on the absolute numbers. You cannot pull the blanket on one side and expose your legs to mosquitoes, or put it over your legs and expose your face to mosquitoes. You see, there is an overall shortage, and one cannot go on this tug of war. So I submit to the government that A, do not transgress into federal relations in a one-sided manner, B, appreciate the problem, and C, sir, please take an overview of the total shortage so that both center and states can function properly. Thank you, sir. श्री सुरेंद्र सिंह नागर। सभापति जी, राजस्थान के इतिहास में
जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्नाधाय गुजरी का भी नाम लिया जाता है, जिसने Your chairman was a student Yes, at Sani he- School Chittorgarh, ओके and the इसलिए fort was आपको- always before me for 7 years. Go ahead. थैंक यू सर। जिन्होंने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि माना और जिसके लिए उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान भी दिया। इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए जाता है, सच बोलना पड़ता है। इतिहास में पन्नाधाय का नाम त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, स्वामी भक्ति के लिए, इससे बड़ा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इतिहास में अनूठा उदाहरण होने के बावजूद पन्नाधाय को अभी तक उचित सम्मान नहीं मिल पाया। राजस्थान के विभिन्न सामाजिक संगठन, राजस्थान के विभिन्न समाजों के लोग लंबे समय से राजस्थान की सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि पन्नाधाय को राजस्थान के पाठ्यक्रम में और पन्नाधाय की मूर्ति राजस्थान में लगाने की मांग वो लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने अभी तक इन सामाजिक संगठनों वे वहां के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, न पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया है और न उनकी मूर्ति अभी तक उन्होंने लगाई है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वह हस्तक्षेप कर पन्नाधाय को उचित सम्मान दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों की मांग के अनुसार मूर्ति लगाना और राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मैं मांग करता हूं। Sri M. Shanmugam. Thank you, Chairman, sir. I raise the withdrawal of labor codes or keep them in abeyance. Sir, the Union government has made unsuccessful attempt to simplify and codify the laws into one uniform code to ease trade and improve trade and commerce in nation. In 2002, Second National Commission on Labour recommended to the consolidate 29 labour laws and its recommendation Ministry of Labour and Employment 2019 introduced 4 bills. Parliament to bring codes on wages, codes on industrial relations, codes on social security and codes on occupational safety, health and working conditions. Sir, these bills were moved in Parliament without having an ample of discussions and developing consensus in tripartite meeting. These codes have proved to be anti-workers as they paved the way to hire and fire policy and restrict the right to strike. The contract laborers have largely been denied basic protection such as assured wages because the code has brought a new form of short-term labor known as fixed-term employment. The codes on social security also creates enabling provision to notify schemes for gig and platform workers, but there remains a lack of clarity in this definition. Keeping in these views, some states' government are reluctant to frame draft rules for notification. Sir, therefore, this is a high time that the Union government should revisit these 4 codes, and I urge the Union government to convene the Indian Labour Conference and a tripartite meeting to discuss with the trade union to arrive at a consensus on the important legislative proposal. I would therefore suggest that the government may withdraw these codes as done in the farmers' law or keep them in abeyance. Thank you. Sri G.C. Chandrasekhar. Thank you. Sir, in the country, we totally produce about 8 lakh tons of areca nuts, out of which the Karnataka alone produces around 6 lakh tons, sir. And nearly 20 lakh families depending on this. Sir, in 2014, per quintal, farmers used to get around 1 lakh rupees. Now they are getting only 39,000 rupees per quintal. Sir, when our country is producing surplus amount of crop, what is the necessary to import from Bhutan, Bangla and Myanmar and even from Dubai, where they do not grow areca at all? Sir, other side, due to heavy floods,
from last 3 years, 33% of crop loss worth around 70,000 lakhs. Sir, around 15 MPs represent this belt, even though we are not able to provide justice to farmers, sir. Sir, not only this, Karnataka stands in first place, producing 33 tons of pepper, but the rate has come down to 350, which was 650 in 2014, due to 99% of imports are happening from Indonesia, Vietnam, and Sri Lanka, sir. Sir, finally, the tea imports increased to 176% in 2021. For all these things, the exporting countries enjoying agreement like Asian, Indo-Sri Lanka, bilateral agreement, and other unscientific free trade agreements, sir. Sir, I request through you the kindly to restructure the policies and programs which is effective the farming community, sir. Thank you. Thank you very much. Shri Rajiv Shukla. धन्यवाद चेयरमैन सर। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। सीमा सुरक्षा बल ने नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लगभग 268 ड्रोन देखे जाने की सूचना दी है। यह संख्या 2021 में 109, 20 में 49 और 2019 में 35 थी। इसका सीधा मतलब है कि ड्रोन जो है सीमा पार से लगातार भारी संख्या में भारतीय सीमा में भेजे जा रहे हैं और ये जो इसका इजाफा होना, इसकी बढ़ोतरी होना हमारे लिए चिंता का विषय है। नियंत्रण रेखा पर विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने और घुसपैठ में वृद्धि हुई है। महोदय, यह भी चिंता का विषय है कि ड्रोन शॉट एट LOC हैव ए सर्टेन सोफिस्टिकेशन and technology similar to the ones produced by China. For example, Barak drone. Pakistan claims this is indigenous product, but actually its technology is similar to China's Rainbow series of unmanned aerial vehicles. महोदय, रिपोर्ट के अनुसार देखे गए 268 में से केवल 16 ऐसे ड्रोन को मार गिराया गया। इसका मतलब हमारा हिट स्ट्राइक रेट भाई बहुत कम है। हमारी सरकार से मांग है कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी क्षमता और प्रभावशीलता के बारे में सोचने की जरूरत है कि एंटी ड्रोन सिस्टम को और स्ट्रांग किया जाए। उन सब को कैसे मार गिरा सकते हैं, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय और सरकार से स्थिति की बारीकी से निगरानी करने, कम हिट रेट के कारणों का पता लगाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह करता हूँ। मारे गए ड्रोन के विश्लेषण से पता चला कि ड्रोन का उपयोग सीमा पार विशेषकर पंजाब में नशीले पदार्थों के परिवहन और तस्करी लिए किया जाता है, स्मगलिंग के लिए जो ड्रग्स वगैरह। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हम अपने पड़ोसी की मंशा को जानते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दे को सदन में उठाकर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री KRN Rajesh Kumar. Honorable Chairman, sir, the Ministry of Animal Husbandry through their website have invited the suggestion from stakeholders with regards of draft of Prevention of Cruelty to Animal Amendment Bill 2022. I am raising the concern of poultry farmers to not include poultry birds under draft of PCA Amendment Bill. India is now the world's third largest egg producer with the industry size of $20 billion. The total poultry birds in the country is approximately 1.2 billion. The poultry meat production is about 4.8 billion tons per year. The country has exported 322,000 metric tons of egg and meat to the countries such as Oman, Maldives, Indonesia, Vietnam, Bhutan, Japan and Russia. Tamil Nadu accounts for maximum egg production in the country. The Namakkal district in Tamil Nadu is famous for poultry, and around 6 crore eggs are produced every day and supplied throughout India. Sir, not only Tamil Nadu, the Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, sir, Gujarat also, Madhya Pradesh, Orissa, West Bengal and northeastern states are major egg contributor. Approximately 20 lakhs families are involved directly or indirectly in this field. Sir, the draft PC Amendment Bill fails to address the concern of the poultry farmers. The domesticated birds cannot be treated as animals. To quote one example, Section 11 in this bill is about the penal provisions from 1,000 rupees to 2,500 rupees.
the cost of the poultry birds is nearly only 400 rupees. And also many other sections such as 3A, 10.2, 11.1, 11C, 34, etc. also raise the concerns. Already the Ministry of Animal Husbandry from the respective state governments are regulating poultry under the state law. Therefore, I request the Union Minister to invite the important stakeholder and the poultry farmers and incorporate this suggestion in this bill, sir. Sir, 1 minute, it is by considering the poultry birds as production birds in line with the dairy production animal. The entire draft of PC amendment bill shall expect the poultry not to include in this bill. Sir, poultry is a rural industry. Due to its special nature and economic the viability, I humbly request the Honorable Minister of Animal Husbandry to regulate the poultry in coordination with the respective state governments, sir. Honorable Minister Shri Purushottam Rupala. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सांसद श्री ने जो कंसर्न पोल्ट्री फार्मर्स के लिए उठाया है, मैं उस पर कंसर्न का धन्यवाद करता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को और पूरे देश के पोल्ट्री फार्मर्स को आश्वासन देना चाहूँगा कि ऐसे कोई कानून में सुधार से देश के पोल्ट्री फार्मरों के हित को नुकसान करने का भारत सरकार का कतई इरादा नहीं है और ऐसा कुछ भी हम नहीं होने देंगे। ये जो कानून के तहत हमने आप वेबसाइट के थ्रू सजेशन मांगे हैं, उसमें राज्य सरकारों से भी हम उनकी प्रतिक्रिया अवश्य लेंगे, आप फार्मर्सों की प्रतिक्रिया भी अवश्य लेंगे और उसके बाद ही इसमें कुछ करना होगा वो करेंगे। मगर इसके बाद भी मैं आपका जो एक सजेशन है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें आपने कहा है कि पोल्ट्री फार्मर्स को डेयरी फार्मर्स के साथ जोड़ना चाहिए। ये नहीं करने जैसा सुझाव है, उसके साथ मत जोड़िए, क्योंकि डेयरी फार्मर्स में फिर गाय और भैंस आ जाएगी और उसी के साथ इसकी तुलना आप ही मत करिए, ऐसा प्रेजेंटेशन भी आप मत करिए। हम ही पोल्ट्री फार्मर्स के हित की जो करणीय चीज़ है वो करेंगे। देश के पोल्ट्री फार्मर्स आज देश के अर्थतंत्र का बहुत बड़ा पिलर है, उसको और मजबूत करेंगे। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, I am happy the Minister of Education is here because I am raising a very important issue, of course. Sir, the Right to Education Act 2009 enables children with special needs and those who are differently abled children to pursue mainstream education by mandating public schools to reserve 25% of seats for students coming from economically weaker sections and disadvantaged groups or children with special needs. So the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016 reinforced their right to a dignified life, but many of these children remain without formal education. Sir, in India, there are approximately 78,64,000 differently abled children. However, as per a UNESCO report published in 2019, 12% of children with disability drop out of school, and an additional 27% have never attended any educational institution. So the main reason for this is the lack of special teachers in mainstream schools. Sir, the teachers who are qualified as special teachers have to obtain or required to obtain a degree in B.Ed Special Education for teaching special children. Further, moreover, they are required to obtain a license from the Rehabilitation Council of India to teach the special children. However, there is no vigilance from the RCA as well. That is different. Sir, the main issue is, sir, in the mainstream schools, since there are lack of special educators, the teachers, other teachers do not treat the special children as they should, sir. Sir, very, very important. I shall conclude. They are treated as abnormal and they are called as a problem and they are almost failed and most of them drop out of the schools. And those specially trained teachers hesitate to come to mainstream schools because they are employed only on contract basis and their pay scale is very, very meager when compared to the other teachers. So, sir, there are two important issues to be taken into consideration. One, those teachers who are qualified,
and the differently abled children who need to be imparted with education. Sir, so I urge the Minister to revise the school education policies to employ more special trained teachers to teach the differently abled children with interest on the children as well as the teacher. And before that, those teachers who have already been employed on contract basis should also be, their pay scale has to be revised on par with the mainstream school teachers. Thank you very much. श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूं कि आज आपने मुझे सदन में एक ऐसा विषय रखने का अवसर दिया जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि बुजुर्गों की सेवाओं को अच्छे ढंग से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करने का संकल्प लिया है। महोदय, यद्यपि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, भारत युवाओं का देश है, लेकिन महोदय आज का युवा ही कल बुजुर्ग की तरफ अग्रसरित होगा, इसलिए उनकी चिंता करना हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों को दिखाता है। महोदय, मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे पूरे देश में बुजुर्गों को राष्ट्रीय वरिष्ठ जन कल्याण जो योजना है, नेशनल एजिंग सेंटर, एम्स नई दिल्ली, एम्स चेन्नई 2 है, तीसरी जगह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां प्रधानमंत्री जी के नाते, उनके प्रयास के नाते उसकी शुरुआत हुई है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हमारे यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर से लेकर के दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर के सटा हुआ प्रदेश बिहार, सटा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, सटा हुआ प्रदेश झारखंड, आज तमाम जगहों से लगभग 20 करोड़ मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, और अगर उसका हम आंकड़ा निकालें तो कम से कम 2 करोड़ मरीजों की संख्या बुजुर्गों की होती है। उनका इलाज बेहतर ढंग से किया जाए, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो जितनी भी नीतियां हैं वो सबको पता है। अभी हम सबके लिए बड़े गौरव का क्षण है जब G20 की अध्यक्षता हमारा देश करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। यह संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है। महोदय, वाराणसी एक आध्यात्मिक नगरी है, एक धार्मिक नगरी है, एक पौराणिक नगरी है। यहाँ पर तमाम पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पर मोक्षदायिनी गंगा भी है, जहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त भी करना चाहते हैं। ऐसे में महोदय, अगर यहाँ पर नेशनल एजिंग सेंटर की स्थापना व्यापक पैमाने पर हो जाती है तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो अभी नया डिपार्टमेंट खुला है, जरा डिपार्टमेंट, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कंसल्टेंट तथा रेजिडेंट डॉक्टर, अन्य सहायक कर्मचारियों की संख्या कम है, उनको बढ़ाने के लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत। मेड योर पॉइंट। श्रीमती दर्शना सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। महोदय, अभी हाल ही में 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक काशी में तमिल संगमम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर काशी तमिल संगमम ऐसा 2 संस्कृतियों का सम्मेलन था जो दक्षिण और उत्तर के मध्य, प्राचीन से नवीन तक आचार विचार, भाषा, साहित्य को एक सूत्र में बांधकर सांस्कृतिक समन्वय को मजबूत करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की 2 संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश है, जो संभवतः 1000 वर्ष बाद की गई। अंतिम तमिल संगम 10वीं शताब्दी में हुआ था। यह संगम प्रधानमंत्री जी के विजन एक भारत
श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक महान प्रयास है और इससे भावनात्मक एकता स्थापित होगी। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इससे पहले इस तरह का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया और इस देश ने लंबे समय तक सांस्कृतिक अलगाववाद का दंश झेला है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक एकता को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है वह अपने आप में अद्वितीय और महान प्रयास है। इस संगमम में ज्ञान के विभिन्न प्रारूपों, साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग के साथ आधुनिक नवाचार, व्यापार विनिमय और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आदि पर सेमिनार, चर्चा, व्याख्यान आदि आयोजित किए गए। यह भारतीय सनातन परंपरा के वशीभूत जनमानस में बसा जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते एकात्मकता के वैदिक महामंत्र को साकार करने का आयोजन था। विशेष बात यह रही, यह आयोजन केवल काशी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व और प्रबंधन से काशी में आए तमिल भाई बहनों को प्रयागराज एवं अयोध्या के भी दर्शन कराए गए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा को और मजबूत करता है। अतः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि भविष्य में इस प्रकार का सांस्कृतिक मिलन और संवाद का आयोजन अन्य जगहों पर भी किया जाए, जिससे सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता मोहंता absent. Shri P. Wilson. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity. I rise today to bring to the attention of the Honorable Minister for Civil Aviation through this august house the need to modernize various airports in Tamil Nadu in order to cater to the needs of the industries, trade and commerce and tourism sectors and for the benefit of the citizens. Sir, there is a quote, "A mile of highway will take you only to a mile, but a mile of a runway will take you anywhere." So airports are catalysts for economic growth. A state like Tamil Nadu, which is in the top 3 of any growth maker, therefore deserves and requires world-class airports. Sir, the state's capital, Chennai, has the highest domestic and international traffic in the state. Yet Chennai airport is far from modern, let alone international standard. Sir, Chennai's airport should be on par with Delhi, Bombay or Bangalore. Yet sadly, it is not. Chennai is thus losing business. The Ministry of Civil Aviation has to expedite establishment of the planned second airport with ultra-modern international facilities so as to make Chennai the commercial hub of South India. Sir, the focus of the ministry is required not only in Chennai, but also Madurai, the second largest city in the state of Tamil Nadu. Madurai is the gateway for 13 southern and central districts, including Dindigul, Theni, Virudhunagar, Tirunelveli and Kanyakumari. These districts have a total population of 2,32,93,738, which accounts for 29% of the state population. Every year, lakhs of passengers travel from Madurai to foreign countries. However, due to lack of direct air connectivity to many other international destinations, tourism, export and economic growth has been stunted in this region. This also results in the exploitation of traffic in Chennai airport. Non-inclusion of the Madurai airport as a point of call airport for other international destinations by the ministry has been preventing foreign airliners from operating direct services to Madurai. Several foreign airlines have already requested the Civil Aviation Ministry to address this concern, to which no action has been taken yet. The appointment of the planned current officer at the International Cargo Terminal at Madurai Airport is also pending for a long time, which has hampered export and import via Madurai Airport, sir. Cargo operations are also delayed due to customs. The airport lacks CSF staffs and is not working around the clock. However, no steps have been taken in spite of the repeated requests to make Madurai an international airport with such facilities of import and exports. Apart from this, sir, the plight of Tiruchirappalli, Coimbatore airports causes a grave concern. The UDAN scheme covers 5 airports in Tamil Nadu: Salem, Neyveli, Vellore, Ramnath and Tanjore. It has been 5 years since the plan was launched. Flight operations began only from the Salem airport.
Sir, since it is the need of our to augment the growth of Tamil Nadu, I request the Honorable Union Minister for Civil Aviation through this August House to address the aforementioned issue expeditiously and also inform the status of the disbursal funds of all airports. Thank you, sir. Miss Saroj Pandey, absent. Shri Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जब जीएसटी का कानून इस देश के अंदर लाया गया तो देश के लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी को टैक्स देने में राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी टैक्स की जटिलताओं से छुट्टी मिलेगी और टैक्स भरने में उनको आसानी होगी। लेकिन मान्यवर, महंगाई बढ़ती गई, टैक्स का बोझ आम आदमी पे बढ़ता गया और इसके बाद जहां तक व्यापारियों का सवाल है, छोटे व्यापारी टैक्स की जटिलताओं से, टैक्स भरने की प्रक्रियाओं से और रोज-रोज के संशोधन से ऊब चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में टैक्स के नियमों में जीएसटी आने के बाद संशोधन किया गया मान्यवर, जिसके कारण से आम आदमी परेशान है। और टैक्स आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, लोगों के मन में यह धारणा थी कि 10% का टैक्स होगा, 5% राज्य को जाएगा, 5% केंद्र को जाएगा। आपने वन नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। और इतने टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगा, सरसों का तेल महंगा, आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज, गरीब की थाली महंगी कर दी मान्यवर। ऐसी सरकार है कि रोटी पर 5% और पराठा पे 18% टैक्स, ये कैसी टैक्स की प्रणाली है मान्यवर। और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय पे दिलाना चाहता हूं मान्यवर। एक हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया, उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। मैं तो मान्यवर यही आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। The honorable member will give details of these two incidents, and honorable member is yet to give details of the information. I have given, sir. No, not given. Check up. I have given, give the details also. Sir, and please conclude. हाँ, concluding, sir. 30 seconds. So, sir, ये टैक्स की जो प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू करके व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से जीएसटी को जीएसटी ही रहने दीजिए, उसको गुंडा सर्विस टैक्स में तब्दील मत। श्री सुजीत कुमार। Sir, thank you. I was not supposed to speak today, but thank you for the opportunity. Sir, I wish to draw the attention of the House and the government about an issue which has grave implications for the health of our country, particularly youth and citizens of our country, sir. Sir, the issue is unregulated and unrestrained advertisement of tobacco and cigarette products on OTT platform. Sir, we all know that the OTT platforms bypass cable, broadcast and satellite channels, and they are able to advertise the cigarette and tobacco products without any restraint, sir. Sir, I don't need to tell the August House the harmful effects of cigarettes. Sir, cigarettes and tobacco is a prominent risk factor for major diseases in the country. And sir, 40% of the non-communicable diseases are directly attributable to cigarettes and tobacco products. Sir, a study done by an organization called Global Youth Tobacco Survey has highlighted that 14 lakhs Indians on an average die every year due to the consumption of these products. And the prevalence of tobacco use among boys is 9.6% and girls is 7.4%. These are boys and girls between 13 to 18 years of age.
Sir, we all know that young boys and girls, when they see a movie star smoking or indulging in any tobacco use on TV or on films, they get motivated to use those products, sir. And sir, a study conducted in New Delhi has shown that adolescents between 12 to 16 years of age who have high exposure to Bollywood movies are 2.6 times more likely to consume these products, sir. And also, sir, it is known that the viewership of OTT platform has significantly increased, particularly post-pandemic. And sir, there is another study conducted by MICA, Mudra Institute of Communication, Ahmedabad, which tells us that, sir, young people between 15 to 34 age group spend on an average 70 minutes a day viewing OTT platforms. Sir, now it is basic common sense that the rules which apply to TV and movies should also apply to OTT platforms. When we have stringent regulations guiding the advertisement of tobacco and cigarette products in movies and televisions, why is the same standard not applicable to OTT platforms, sir? And also, sir, because of this regulatory gap, OTT platforms have become a haven for advertisement of cigarettes and tobacco products. So, sir, through you, I would like to bring the attention of the government about the urgent need to regulate and restrain the use of tobacco and cigarette advertisements on OTT platforms. Thank you. And to use the leverage the use of the Kotpa Act in this regard, sir. Thank you. Shri Jugal Singh Lokhandwala. धन्यवाद सभापति महोदय। Next. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सभा का Associating with you. आकर्षित करता हूं। भारत के हजारों। Yes, ma'am. Associate. Yes. Sir, I want to dissociate with the gentleman's comment. Thank you, ma'am. Yes. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भारत में हजारों साल पुराने मंदिर, महल, तालाब, बावड़ी आदि इत्यादि राजा महाराजों ने जो बनाया था, उसको हजारों साल पुराने हमारे कई मॉन्यूमेंट आज की तारीख में है, पर उसको जिस तरह रख रखाव करना चाहिए उस तरह का रख रखाव नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से कहना चाहूँगा कि हम इस रखरखाव के संज्ञान में रखते हुए हर एक राज्य में आप देखेंगे कि ऐसे कई मूवमेंट, बावड़ी होगी, मंदिर होगा, कई तालाब होंगे, उसके लिए कई राज्यों के अंदर हम एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए कि जिसके माध्यम से नए स्ट्रक्चर को, उसी स्ट्रक्चर को रीडेवलपमेंट किया जाए, जिसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी मालूम पड़े कि हमारा भारत का इतिहास क्या है और किस तरह उसको हमारे पुरखों ने किस तरह रख रखाव किया था। आज की तारीख में हमने कई जगह पे देखा हुआ है कि कई मंदिरों को तस्त नस्त किया गया है। ऐसे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम वो मंदिर फिर से बनाए जा सकते हैं। हमारे कलाकृति के कई हमारे नौजवान उस पीढ़ी को भी ज्वाइन करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर ये हमारी पीढ़ी ये काम सीखेगी और हमारी कला पूरे देश के अंदर इसका नाम रहेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। डॉक्टर कल्पना सैनी। मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया और समस्त सदन को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, भारत की बेटियाँ भारत की शान हैं। इसी क्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रथम बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर महिला सशक्तिकरण हेतु समस्त भारतवर्ष के मार्गदर्शन के लिए आदर्श वाक्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटियों के पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और समग्र विकास के लिए सार्थक रूप से समूचे भारत में लागू करने पर जोर दिया गया और तब से लेकर अब तक भारत की बेटियों के कल्याण के लिए हमारी सरकार हर संभव कार्य कर रही है। वर्ष 2012 में भारत की बेटी निर्भया के साथ हुए विभत्स और कभी न भूलने वाले
घटनाक्रम के संबंध में लोकतंत्र के इस मंदिर में मेरा माननीय सभापति महोदय जी के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि इससे बेटी को सबल बनाओ भी जोड़कर कार्यान्वित करने का समय आ गया है। सभापति महोदय, अभी हाल में द्वारका दिल्ली में भारत की एक बेटी पर तेजाब फेंककर उसको जान से मारने की कोशिश हुई। मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा सादर निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के संकल्पित उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अब बेटी को सबल बनाओ को भी सम्मिलित कर लें। इस परिप्रेक्ष्य में मैं हमारी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बेटियों के संरक्षण व बौद्धिक विकास के साथ साथ उनको शारीरिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए कक्षा 1 से 12 तक विशेष शैक्षिक क्वेश्चन 151